We're live, but let's wait for a few seconds for people to join. So I guess let's start. Um, Assalamualaikum everyone, this is Zobia, and today we're going to have a session on technical interview preparation. It's basically going to help you understand how the technical interviews are happening in the industry and how do you prepare for them. And today I have an awesome panel with me. I'll quickly start with my introduction. I'm a software engineer at Kareem in Dubai. I graduated from FAST Islamabad in 2016 in computer science. And in Dubai, I've been working for 3 years. Before that, I had a brief working experience in Pakistan as well. I'm also leading the Dubai chapter of PWIC, and I have organized several events and workshops under this chapter. And here's my LinkedIn in case you want to connect. You could also search with Zobia Haja, and that's me. Um, Over to Farhana for her introduction. She's one of our amazing speakers today. Hi everyone. So actually I'm working as a lead software quality assurance in Contour software at the moment, and I have almost 13 plus years of experience in QA. I started as a developer, but then I moved on to the QA side, but because this is what I love to do. I have been associated with the PVIC since very start, and I've organized and participated in the first testers conference, which was held at the national level, and I have been participating as a guest speaker in many of the seminars and tester meetups that are held within different cities of Pakistan. And here is my LinkedIn profile, which you can access anytime. And I think this is the time to give back to the industry what we have taken from the industry. So here we are for your help. Thank you so much, Farhana. I think you have a very vast experience and you can provide very meaningful insights to our candidates. So I'm sure it's going to be super helpful. So thank you again for joining us. With me, I also have Umer Farooq, who is again super talented. Umer, would you mind introducing yourself? Yeah, thank you, Zobia. And first of all, I would like to thank you, Pivik, for having me here. I'm Umer Farooq and working as a CTO at Technology Space, and we provide custom tailored hardware and software solutions to different industries across the globe. I'm also the co-founder of RoboMiners, which is a STEM-based academy for kids, and we offer technical courses like Arduino, science, maths, IoTs, robotics, etc. So I started programming when I was in a second grade and learned a lot of programming languages like Basic, C++, Visual Basic, and all that from different books. At that time, there were no internet, no video tutorials. And then I did my first internship at a software house in my ninth grade. And I never studied computers during my school or college, but I was able to bag many events across Pakistan. I've been representing Pakistan across different events, different computer science events, different robotic events across the globe. And then I tried to give back what I have learned from that experience. And I conducted a number of free workshops across Pakistan in different universities. I've been to Karachi, Sakkar, Peshawar, Lahore, and many other places. So overall, I have a lot of experience by working with different industries, and here I am to help a number of candidates to ace the interviews. My LinkedIn profile is mentioned as well, so if you want to contact me, I'm always available. So please feel free to touch me. Cool. Thank you so much, Umar. Thank you for being here with us. So let's have a look at today's agenda. We're going to start with the hiring process in general. We're just going to briefly touch this. We're not going to go into the details. Then we have the main topic for today is going to be the preparation for tech interviews, like software engineering roles and QA roles. We're going to walk through a sample problem and some tips and resources. So let's have a look at how the hiring process looks. So a typical hiring process, if you try to understand it, it can be divided into um, basically three stages. The first stage is when you're trying to get the interviews. This is your time to sort of impress the companies and get the recruiters to contact you and get you the interviews.
So I'll let Farhana explain how this is done and how, like, if she has any tips for us to get more companies to contact us and give us a chance to interview with them. So definitely you all must have heard that, first impression is the last impression. So how does it fit here? So actually you are contacting the companies through the resume that you're sharing. So I would suggest that you should invest some time on that and have a strong profile. How can you develop that profile when you don't have a experience? So you can start with the good project folios on different platforms or mediums like GitHub. If you have gone through some free or some paid certifications, you can mention that in your resume. And you should also get your resume peer reviewed by some of the peers in the industry or the people in the industry who are working in the company, so they can get you an actual idea कि आपके रिज्यूमे के अंदर कौन सी ऐसी चीज है which is missing, which you can add and improve. Secondly, I would like to add that this is an era of social media presence, and we have many professional mediums जिसका हम part बन सकते हैं. Like we have LinkedIn medium where we can get our profile made, or we can connect to the people of the industry through that, and we can use those connections to actually grow and learn. उनके थ्रू हमें अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहता है, और इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट टू अ कंपनी थ्रू सम रेफरल और कनेक्शन रादर देन अप्लाइंग थ्रू द पोर्टल्स इटसेल्फ, बिकॉज कंपनीज प्रेफर जो रिज्यूमेज उनके एम्प्लॉयज के थ्रू आते हैं उनको हमेशा एक प्रेफरेंस मिलती है. सो दैट्स लाइक अ गुड आइडिया, या यू गेट कनेक्टेड टू द पीपल थ्रू सच प्लेटफॉर्म्स, और आप अपने रिज्यूमेज उनके थ्रू शेयर करें. और so इस केस में आपके पास connections and referrals play a very important part. You get registered to the communities like pvik है, कुछ आपकी development की communities हैं, कुछ आपकी testing की communities हैं. So join them and develop your connections through which you will get to know about the opportunities through which you can float your resumes and get into the industry. Cool. I think that's true. Even in my experience, if you keep applying to several jobs, a lot of times you do not get any response. But if you have any referral or any connection, somebody you worked with in past, or if you had a great experience, they're definitely going to refer you, and it will help you speed up the process. And then we have the actual interview process, like when the recruiter contacts you and you get the interviews. We can go into this process in a few minutes, but let's just first jump to the third stage of the hiring process, which is, let's say you've done with all of your interviews and you have one of the two outcomes. Either you have an offer or a rejection. I'll ask Umer to share his experience and thoughts on how do you deal with rejections and how do you negotiate with offers, and how important is it to do that. Sure. So one of the important thing during this era is that you need to handle rejections. Unfortunately, हमारे जो parents हैं वो हमें इस तरह brought up करते हैं कि वो हमें feel कराते हैं कि we are very special, we can achieve everything in our lives, and so and so. और जब हम इस स्टेज पर आते हैं जहाँ पे rejections ही rejections आती हैं, वो हमसे cope नहीं हो पाती, and then it leads to severe consequences. So यहाँ पे जो कुछ मेरी एडवाइसेस हैं वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात को समझना है कि अब आपकी लाइफ में रिजेक्शंस एक हिस्सा बन जाएंगी, एंड जब भी आप किसी इंटरव्यू पे जाएंगे एंड व्हेन यू कम बैक और अगर आपको लेट्स से एक रिजेक्शन आती है तो यू नीड टू रीथिंक एंड एनालाइज द सिचुएशन कि हुआ क्या था, क्या वो चीजें आप गलत करके आएंगे, क्योंकि जब आप बैठे होते हैं आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा ये मेरे से मिस्टेक हुई, ये मेरे से मिस्टेक होगी. अगर आपको नहीं पता चल रहा देन यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर रिक्रूटर और योर एम्प्लॉयर. आप उनको ईमेल लिखें, बड़ी प्रोफेशनल ईमेल बना के लिखें कि क्या वो गलतियां थी. जस्ट ट्राई टू आस्क, क्योंकि जो सेल्फ एनालिसिस है दैट विल नेवर पेंट द होल पिक्चर. कि आप अपने बारे में कहेंगे यार मैं तो बड़ा जबरदस्त हूं, मैं जिससे भी सुनता हूँ कहते हैं मेरा बेटा तो बड़ा जबरदस्त है, पता नहीं उसको क्यों नहीं रख रहे. अब मुझे पता है कि उसने क्या गलतियां की हैं, लेकिन वो मुझसे अगर पूछता है तो मैं हमेशा उसको फीडबैक देता हूँ. आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरी ईमेल जो कि फीडबैक के ऊपर आती है. और कभी कभी ये होता है कि इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंटरव्यूअर, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो आई रियलाइज कि दैट पर्सन इज नॉट सूटेड फॉर दैट जॉब. जिस रोल की बात कर रहा है दैट डजंट सूट हिम, तो मैं शायद उसको उस वजह से भी रिजेक्ट कर सकता हूँ. सो यू नीड टू बिल्ड रिजिलियंस इन योर सेल्फ. अगर आपकी जो परवरिश है वो इस तरह हुई है कि आप स्पेशल हैं, हर चीज आपको मिल रही है, तो इस इरा पे आके आपको भूलना पड़ेगा कि नहीं, रिजेक्शंस मुझे मिलेंगी एंड यू नीड टू कोप विद इट.
So this is my advice for how to deal with rejections. And then beyond, अगर आपको लेट्स से ऑफर मिल जाती है तो सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने ऑफर मिली और आपने जंप कर लिया. आपके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए नेगोशिएशन की. आपने हाउ यू आर गोइंग टू डील विद सम नेगोशिएशन. हो सकता है वो आपको लो बॉल कर रहे हैं, वो आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी आपके ज़हन में हो, आप लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपके ज़हन में एक्सपेक्टेड सैलरी 65 की थी एंड दे से नो वी आर गोइंग टू ऑफर 30,000. वो तो कहेंगे. सो यू शुड हैव द एबिलिटी टू आस्क योर रिक्रूटर्स कि भाई मेरी ये वर्थ है, राइट. मैंने मार्केट स्टडी किया है और मेरी इस एक्सपीरियंस के जो लोग हैं दैट इज दिस पे. कभी भी आपने उनको रेंज नहीं बतानी. अक्सर लोग गलती करते हैं, वो आके कहते हैं एनीथिंग बिटवीन 40 to 60. व्हाट डू यू थिंक है जो इंटरव्यूअर क्या करेगा? ही विल साइन अ 40 के बिकॉज आपने कह दिया. सो यू शुड ऑलवेज मेंशन कि राइट दिस इज आई एम परफेक्टली सूटेबल फॉर दिस जॉब, मैं इस तरह यूनिक हूँ बाकी सबसे. सो आई थिंक आई शुड बी प्रोवाइडेड लाइक से 65,000. सो ट्राई टू सी के लोग नेगोशिएट किस तरह करते हैं. यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इस तरह के वीडियोस हैं जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि नेगोशिएशन किस तरह करनी है. सो बिफोर यू गो जस्ट ट्राई टू वॉच दोज वीडियोस टू लर्न के किस तरह किसी से बात करनी है. क्योंकि अक्सर हम लोग चुप हो जाते हैं और इंटरव्यूअर आपका इस बात का फायदा उठाता है. इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स ट्रू. So I would like a point here कि आपकी जो सैलरी की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये वाली गलती भी करते हैं और फिर उसमें इफ़ यू नो आप उस क्राइटेरिया से गुजर भी जाते हैं एंड सीइंग द फिगर दैट यू आर आस्किंग फॉर और वो उस पोजीशन के लिए जस्टिफाई नहीं करती, तो हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप खो दें. सो येस, मार्केट सर्वे आपके पास होना चाहिए, पीयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो मार्केट में कितनी सैलरी ले रहे हैं एंड व्हाट आर योर स्किल सेट. उसके अकॉर्डिंगली देन यू कैन आस्क फॉर द फिगर्स एंड गो थ्रू द वीडियोस एंड गिव अ फिगर. और एक और गलती जो लोग करते हैं वो बेसिकली ये करते हैं कि वो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी हैप्पी सैलरी क्या है तो दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर प्रीवियस कंपनी. अभी उनको 2 महीने भी नहीं हुए होते और कहते हैं कि मुझे 60,000 मिल रहा है और थर्ड मंथ आके कहते हैं कि मुझे तो 1,50,000 चाहिए. तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. नेवर टेल कि आपको पिछली कंपनी क्या दे रही है. आप जिस कंपनी में इंटरव्यू पे आए हैं, आपके स्किल्स, आपके इंटरव्यू जिस तरह आपने किया उसके ऊपर आपकी अगली पे डिसाइड होगी, नॉट बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस कंपनी. Yeah, I think यहाँ पे especially for people who are just entering the industry या जो इतने confident नहीं होते, they also make this mistake कि उन्हें लगता है कि company is doing a favor by giving us the job and they don't negotiate their salaries. Because I myself have experienced this कि मुझे कोई जितनी salary देता था मुझे होता था कि wow, like do I even deserve this? तो I think for all such candidates who have ever struggled with this thing, I would suggest trust yourself and believe in yourself. Nobody is hiring you by like आपको कोई फेवर नहीं दे रहा, कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा. दे नीड यू, दे शुड पे यू. If you think you're skilled enough, you've aced their interviews, you should ask for a decent, reasonable salary. Because a lot of people get exploited इस वजह से कि उनमें वो confidence नहीं होता that they are good enough for the job. So yeah. Moving on to the actual interview process. So usually the first stage in an interview process is a recruiter phone screen. Farhana, can you tell us how phone screens are done? Like the recruiter phone screens are done in Pakistan usually. सो एक्चुअली हो गई है कि दैट यू विल गेट आपने जो भी अपने रिज्यूमे पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, सो दे आर गोइंग टू कॉल यू ऑन दैट और आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होगी. सो समटाइम्स इट हैपेंस के लोगों को आदत होती है कि वो अननोन नंबर्स नहीं उठाते एंड दे मिस द अपॉर्चुनिटी. सो गेट रेडी. अगर आपने अप्लाई कहीं कर दिया है तो आप अननोन नंबर्स पे एक तो फ़ोन कॉल्स उठाएं. Second thing is that you have to see कि अचानक से कॉल आ जाती है and you are at a place where you have to evaluate that you can talk easily or not. अगर तो आप कहीं घर में हैं, you can at a place जहाँ पर आप आराम से बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, so go for it. Otherwise if you're out and क्योंकि उसमें आवाज़ आपकी सही नहीं जाती है, आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे टाइम गेन कर लें दैट कॉल मी इन एन आवर और वेन एवर यू आर अवेलेबल एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड और आप अच्छे तरीके से बात कर सकें. इसमें भी एक बात ये भी आएगी कि टॉक इन अ लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल, रादर कि आप सिर्फ एक मीडियम इंग्लिश के थ्रू ही बात करने की कोशिश करें एंड यू आर नॉट एबल टू कन्वे व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. Generally what happens is उसके अंदर they have your resume in front of them and they ask questions about the things that you have mentioned in the resume. That's about your skill set, that about the languages you have mentioned, जो भी technical आपका background है. If you have mentioned about some tools, so according to the post they are taking an interview, so they are going to ask. Suppose अगर एक automated testing की कोई post है तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका experience है नहीं है,
आपने ऑटोमेशन में काम किया है, किस टूल में काम किया है. इफ़ देयर इज़ अ लैंग्वेज स्पेसिफिक पोस्ट, तो वो पूछेंगे कि आपने जावा में काम किया है या डॉट नेट में काम किया है. जस्ट टू गेट अ बेसिक आइडिया कि आप उस स्किल सेट पे पूरा भी उतरते हैं, एंड वट एवर यू हैव मैंशनड इन द रिज्यूमे उसके बारे में हाउ ऑनेस्ट यू आर. और व्हेन दैट थिंग इज पास, तो फिर उसके बाद either they are going to tell you about the time जब वो आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू लेंगे, और मे बी दिल आस्क फॉर योर अवेलेबिलिटी. तो आपने ऐसा टाइम पीरियड सोचना है जिसमें यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड. और फिर अगर आपसे वो पूछते हैं तो वो टाइम दे दें, दैट कुड बी अ वीक और फ्यू डेज टाइम, जिसमें आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकें. Cool. And after the recruiter phone screen, we usually have online assessments. Umar, can you tell us about it? सो बिकॉज ऑफ कोविड ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, तो जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो काफ़ी बढ़ गई. एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वो आपसे टेस्ट भी ले सकते हैं, देन दे कैन इंटरव्यू एज वेल. उसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यू भी हो सकता है, उसमें आप आपके पर्सनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी देखा जा सकता है, नॉन टेक्निकल जिसको हम यूजुअली कहते हैं. तो इसका जो प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड होता है वो ये कि जब भी आपको ऑनलाइन असेसमेंट का है तो सबसे पहले आप ज़ाहिर तैयारी तो करेंगे अपनी जो भी आपकी टेक्निकल नॉलेज की होगी, लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें वो ये हैं कि आप क्या टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ भी हैं. जब आप कैमरा अपना ऑन करते हैं, बहुत सारे लोग कैमरा अपना ऑन नहीं करते. बहुत सारे लोग ऐसे एनवायरनमेंट से बैठ के बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है. दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. उन्होंने लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट चूज नहीं की थी. जिस तरह अगर आप लोगों को हमारी पिक्चर नज़र आ रही है तो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. वी कैन टॉक वेरी क्लियरली. हम लोगों ने इंटरनेट अपनी चीज़ें चेक की हुई हैं, हम लोगों ने अपने माइक्स चेक किए हुए हैं. तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है जब भी आप स्पेशली ऑनलाइन इंटरव्यू के अंदर जा रहे होते हैं. सो हमेशा आप लोग जब भी आजकल आपको ऑनलाइन असेसमेंट या ऑनलाइन इंटरव्यू की ऑफर आती है तो जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट. अगर आपके पास जगह नहीं है, यू नीड टू डू इट. क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू ठीक नहीं होगा, उसमें माइक में बहुत ज़्यादा नॉइज होगी, शोर शराबा होगा, तो जो इंटरव्यूअर होगा, जो भी इंटरव्यू कर रहा होगा, ही विल गेट अनॉयड. और इस तरह की चीज़ें यूजुअली अच्छे एंड पर टर्न आउट नहीं होती. सो जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो इक्विपमेंट है, मैं उसको बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टेक्नोलॉजी. उसको जो हमने लिंक दिया हुआ है, क्या उसने टेस्ट किया हुआ है. अक्सर लोग करते ही हैं कि सॉफ्टवेयर ही उसी टाइम इंस्टॉल कर रहे होते हैं जिस टाइम उनका इंटरव्यू होता है. ज़रूरी नहीं है कि जस्ट टीम्स हो, जूम हो, कुछ भी हो सकता है. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड और 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जस्ट गेट रेडी. Great. And one more thing, usually काफ़ी सारी companies में they do online tests like HackerRank or on some other platforms, they would just give you a test or an assessment. I would suggest be honest with it. A lot of people try to cheat in it, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता. You get to your interview, you get rejected in the first one. So be honest, make an effort to prepare for it. Like अगर आपको पता है कि algorithm से related सवाल आने, just prepare for them instead of cheating in your test. So do it by yourself and try to give the honest and actual data to the company instead of just going through it, because you're going to have other difficult stages in your interview process. Moving on to the third stage, which is going to be a technical phone screen. I think Umar touched it briefly, but again, it's going to usually, let's say if you're applying for a software engineering role, you're going to have an interview online with one of the software engineers in the same company. And usually they start with your resume discussion, like very briefly, they would ask you about one of your projects. So I think it's also important before this interview, you go through your resume and see what you did in each project. So you're ready to answer any questions about these projects. They could quickly ask you something, and this gives them a lot of data about you. So it helps them understand कि आपने बाकी उन projects पे काम किया है या नहीं किया, या किस हद तक किया है, how much was your contribution. So yeah, definitely go through your resume, and also again prepare for, like, be ready for all the basic concepts जो computer science के होते हैं. I think nobody's genius enough to remember all of these things पूरी जिंदगी के लिए. So it's very important that you sit down, you brush up your basics, and then you practice the actual coding problems before this interview. So don't rush into it कि ठीक है कल कर दें, परसों कर दें. Take maybe a week or 2 weeks, but definitely prepare for this interview. And once you're done with all of these 3 stages, and if you're selected for the on-site interviews, you'll probably have a 1 day of on-site interviews. Aajkal, because of the COVID, you can also have the virtual on-site interviews. So they would conduct like 3 or 4 interviews back to back in the same day online for you. So it's a complete loop.
इसमें आपके टेक्निकल भी होते हैं, आपकी बैकग्राउंड भी देखी जाती है, योर एक्सपीरियंस and also the culture fit. So companies trying to see everything, like what you have to offer, how much skilled or experienced you are in that particular field, and they're also testing your problem solving, your coding. So it's going to be a full loop. I'll ask Farhana to share her experience on like how the panel or like how panel interviews are done or how culture interviews are done, culture fit interviews, and I could briefly explain on the technical part. Farhana, you're on mute. So actually what happens is there could be like one-on-one interview and there could be a panel interview. So one-on-one interview is kind of easy because you have to handle one personality, and there are like different personality which you have to deal with. उसमें आपकी टेक्निकल चीज़ें भी होंगी एंड दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट यू दैट यू आर अ टीम प्लेयर. आप कुछ सिनेरियोज दिए जाएंगे जिसमें आपकी एंगर मैनेजमेंट भी देखी जाएगी, आपको के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी पूछा जाएगा एंड दे आर एक्चुअली गोइंग टू सी हाउ यू हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. प्रॉब्लम्स आएंगी, सो अदर देन द टेक्निकल थिंग्स आप उनको कैसे सॉल्व करते हैं. एंड इन अ पैनल इंटरव्यू व्हाट दे ट्राई टू कंफ्यूज थ्रू इज कि एक क्वेश्चन के बाद अभी एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ होता एंड दे ट्राई टू आस्क द अदर क्वेश्चन. सो हाउ डू यू हैंडल इट, आपने कितना गौर से सुना है, आपने उसका आंसर कैसे दिया है, आपको गुस्सा तो नहीं आया है, हाउ पॉजिटिवली आर यू टेकिंग इट. और उसमें आपके पास सोचने का टाइम भी कम होता है. व्हेन ऑन वन आपके पास थोड़ा सोचने का टाइम ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा आपने उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है कि अगर आपके पैनल इंटरव्यूज होते हैं सो हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट. एंड वन थिंग इज़ कि जिस पे मैं बहुत फोकस करूँगी कि जिस भी लैंग्वेज में यू आर कंफर्टेबल आप उस लैंग्वेज में बात करें. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दे आर टॉकिंग इन सपोज उर्दू इन पाकिस्तान एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं आप बताना चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली टेल देम. तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा कि कितना आपका स्किल सेट है, आपको चीज़ें कितनी आती हैं. कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट ट्राई टू बी योर सेल्फ एंड उस लैंग्वेज को यूज़ करें जिसमें आप बहुत इजीली उनको मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. Yeah. And also about language, अगर आपका technical interview है, so I think it gets very hard to discuss your algorithm or problem sometimes in Urdu as well. So I think for those cases, stick to English, but don't worry a lot about your vocabulary or perfection of your language. Your main focus or your goal should be to get your point across. आप जैसे भी कर सकते हैं. And one more important thing is a lot of people prefer कि आप English में interview दें. So for such cases, I think you should definitely ask your interviewer if they are okay if you can use Urdu or not. If they say don't use it, it's okay. Just stick to English, the basic, plain, simple English. Don't worry a lot about vocabulary and perfection. Just get your point across in simple English. And again, in on-site interviews, you're going to have a couple of technical interviews. There could be a coding round, a design round, or data structure and algos round. Let's go into the preparation for those roles. So generally for you coding and algo rounds, the expectation is like you're asked a problem and the expectation is you should be able to solve it. You should be able to think of multiple solutions and discuss the trade-offs. You should be able to code it. Maybe not perfectly syntax errors free, but definitely you should be able to code it in one of the languages. So also, you're expected to know the basic concepts like object-oriented programming, some DB concepts. Like you're a software engineer. If somebody asks you to write a very simple SQL query, you shouldn't be saying, "Okay, मैं तो database engineer नहीं हूँ, मुझे नहीं आती." You should have those concepts, and you should be able to write simple things. So you don't say no to anything. You can try during your interview. Then you have the object-oriented programming, operating systems. Just brush up the basics of these. Don't go into depth for each of these topics. Then we have data structures. Definitely a must for your coding interviews because that's what your interviews are all about. So I know that it varies depending on the company. Some companies would go into like graphs, NP-hard problems and those things. And some would just like maybe stick to arrays, strings, lists, and that's it. Or maybe stacks and queues. So research about the company and depending on that, prepare for these interviews. But as many data structures you can practice, do that. You should definitely know the basic concepts of all of these data structures mentioned here.
And about algorithms, definitely practice some of the algorithms. If you've forgotten everything and you just go into your interview and you're trying to recreate all of those algorithms, it's going to take you ages. So if you're familiar with the basic sorting, searching algorithms, some recursion, you've practiced it, dynamic programming. So you'd have a lot of tools. So I consider all of these data structures and algorithms as tools for solving your problem. So if you're fully equipped with all of these tools, it's not going to a problem. It's not going to be a problem. You'll be able to solve it for sure. But if you're just stuck thinking about the basics, you wouldn't like reach a point where you can actually solve the problem and write code. Um, and then the expectation is to know one of the programming languages really well, maybe not perfectly, but definitely well enough to be able to code it. And that's about the coding and algo rounds. And then we usually have design rounds, which I'll let Umar explain. सो दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट राउंड. ये ऐसा राउंड होता है जिसके अंदर जो इंटरव्यूअर होता है वो एक्चुअली एक थॉट प्रोसेस देखना चाह रहा होता है कैंडिडेट का. सो बिकॉज ऑफ कोविड अब हुआ कुछ इस तरह है कि जो जूनियर और सीनियर रोल्स हैं वो थोड़े से मर्ज होना शुरू हो गए हैं. जो इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन जूनियर से है वो ये कि अब चूंकि उनको अच्छा खासा टाइम मिला था टू बिल्ड एंड पॉलिश देयर स्किल्स, सो अब जो गैप है अगर मैं कहता हूँ कि एक सीनियर बंदा है या जूनियर बंदा है तो काफी हद तक कम हो गया. वी एक्सपेक्ट जूनियर्स कि हम उनसे अगर कोई एक मुश्किल सवाल करते हैं तो अगर उन्होंने कभी उस तरह की कोई चीज नहीं की हुई, बट दे शुड बी एबल टू डू सम काइंड ऑफ ए थॉट कि अच्छा यार इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ टाइनी यूआरएल, तो आप उसको किस तरह करेंगे. मैं जस्ट एक वेग क्वेश्चन दे दूंगा एंड दैट कुड बी इन फॉर्म ऑफ व्हाइट बोर्ड्स भी हो सकता है, पेन पेंसिल के साथ भी हो सकता है. आई यूजुअली प्रेफर व्हाइट बोर्ड्स क्योंकि इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड द कैंडिडेट कैन ओपनली शेयर देयर थॉट्स विद द मार्कर. सो अब आपने क्या करना होता है, अगर आप जूनियर हैं, आपको ज़ाहिर है आपने कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर प्रीवियस लाइफ, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाते कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बट यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट स्टार्ट कि मैं ऐसे करूँगा. फॉर एग्जाम्पल आप शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं ये चीज़ बनाऊंगा, इसका आर्किटेक्चर पे मैं काम करूंगा, देन आई विल कंटिन्यू. अगर आपको क्लाउड के बारे में पता है, जस्ट कीप ऑन शेयरिंग वट एवर यू नो. इट डोंट हैव टू बी राइट, इट डोंट हैव टू बी परफेक्ट, but interview is expecting that you should be able to tell something. अगर आप simply कह देंगे मुझे नहीं पता, I don't know, so that is a very big red flag and a big no from the interviewer. और अब बाद में आप कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं है. So never say no, always and always think about the process कि यार मैं किसको किस तरह implement कर सकता हूँ. And for seniors, सीनियर्स आजकल अगर फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि इस प्रोजेक्ट पे किसी इस फील्ड के सीनियर को हमने हायर करना है. ऐसा नहीं है कि आपने .NET में 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है आपका और मुझे अब रिएक्ट में बंदा चाहिए, सो फॉर यू आर नॉट सीनियर फॉर मी, मतलब मेरे लिए उसकी कोई वर्थ नहीं क्योंकि आपने रिएक्ट पे कभी काम ही नहीं किया हुआ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमेशा सीनियर और जूनियर इस लिहाज से मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ. मैं ये नहीं कहता इसका 10 years का एक्सपीरियंस है, 15 years का एक्सपीरियंस है, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट आई नीड. ठीक है, इस जो भी मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हायरिंग कर रहा हूँ वो क्या है, एंड देन आई आस्क क्वेश्चन. सो फॉर डिजाइन क्वेश्चंस एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने घर में एक व्हाइट बोर्ड रखें. आई वाज इन 5th grade व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट व्हाइट बोर्ड और वो अभी तक मेरे पास है एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट. मैं कोई भी एक रैंडम प्रॉब्लम लेता था और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता. उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए. आई लीड द टेक्नोलॉजी ऑल द टेक्नोलॉजीज इन माय कंपनी और जो भी प्रॉब्लम होता है वी डिस्कस इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. सो इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू प्रैक्टिस. आप एक मुश्किल क्वेश्चंस उठाएं एंड देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व कि किस तरह होगा. करीम की एप्लीकेशन ले ले, उबर की एप्लीकेशन ले ले, गिटहब देख ले, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस कि यार ये किस तरह बनता होगा. उससे आपका दिमाग जो है वो खुलेगा. Yeah, that's true. And as you mentioned, juniors से expectation different होती है, seniors से different होती है. And a lot of times आपको एक मुश्किल problem दिया जाता है. And मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है. Like I got a very difficult problem for design. And for a moment I was like, I just cannot solve this. It's just way beyond my thinking capability. So what's very important is that you keep this in your mind कि आप solve कर सकते हैं. There is nothing in the world that you cannot solve it. All you need is maybe some hints, some confidence, and just like a starting point. So in those situations, definitely discuss with your interviewer and like start doing something instead of giving up. And yes, you will get through the problem. And then उसमें आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि फ़ायदा ये होता है
जो इंटरव्यूअर है वो ये भी देख रहा है कि आप कितना उस पे एफर्ट लगा रहे हैं किसी चीज़ को लर्न करने के लिए भी। सपोज आपको नहीं भी आती है तो हाउ मच यू रेडी टू डिग डाउन एंड लर्न, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जब आप काम कर रहे होंगे उस टाइम पे भी ऐसी करने को मिलेंगी जो आपको नहीं आती हैं। तो वो अप्रोच भी देखनी है कि जब आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम ऐसी मिलेगी तो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट। Exactly. That's very true. And Farhana, that leads us to the preparation for QA roles. Could you guide us through it? यस डेफिनेटली। तो जितना भी हमारे पास क्यूए हायरिंग का प्रोसेस है, आई हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि जनरली जितने भी टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ये वाले एरियाज ऐसे हैं जो हमेशा कर होते हैं। सो फर्स्ट थिंग दे आस्क यू फॉर इज द एक्चुअल प्रोसेस जो किसी कंपनी में फॉलो होता है, इवन इफ दैट स्क्रम एजाइल यूज कर रहे हैं, कोई भी लाइफ साइकिल यूज कर रहे हैं आपकी, उसमें पूरा आपका टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है। बिकॉज क्यू इज रिसोर्स जो तकरीबन हर फेज में इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीके से। सो दे वांट टू नो कि आप एज क्यू ए हाउ कैन यू हेल्प देम इन एवरी फेज। आप किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके उनको हेल्प कर सकते हैं, इवन इन द डिजाइनिंग फेज, इन द डेवलपमेंट फेज, और जब एक चीज़ बन के आ जाती है हाउ यू टेस्ट इट। सो यू शुड बी नोइंग पूरा एक प्रोसेस होता कैसे, और इसके बारे में ऑनलाइन बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, बट यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इट कि एक टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होती है, उसमें कौन से फेजेस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट methodologies that you're using वो अडाप्ट होती हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। देन देयर इज अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल कि सपोज अगर एक डिफेक्ट किसी ने डाल दिया है टेस्टर ने, तो वो पूरी एक लाइफ साइकिल उसकी क्या होगी। वो एक हो सकता है वो एक डेवलपर को सही लगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और वो फिक्स हो जाए, एंड देन हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट। और अगर वो नहीं होता एंड दे से कि ये तो डिज़ाइन है, सो हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन, how you are going to communicate with the whole team, and how are you going to come up with the solution for that. So basic जितनी भी आपकी life cycles हैं उसके बारे में information आपको पता होनी चाहिए, related to the processes, related to the development life cycle, related to the testing life cycle. So this is like basic about the processes that are used in the organization. Second thing is जो आपका एक्चुअल काम है, अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो बहुत सारी टेस्टिंग टाइप्स हैं, राइट, फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। सो यू शुड नो द बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। उन आप टेस्टिंग टाइप्स को करेंगे कैसे, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, और इसमें थोड़ा सा आपका बुकिश नॉलेज भी इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक यू शुड नो कि एक टेस्टिंग टाइप है क्या, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू कि अच्छा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, सो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, इनपुट्स देते हैं, आउटपुट्स को चेक करते हैं, एंड हाउ डू यू डू इट। देन दे आर डिफरेंट टेक्निक्स टू डू इट। सपोज अगर कोई एक नंबर प्रॉब्लम है तो उसको थ्रू बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आप देखेंगे, उसकी क्लास पार्टीशनिंग करेंगे, क्योंकि आप हर तरह की इनपुट देके हर तरह की आउटपुट चेक नहीं कर सकते हैं। सो वो डिफरेंट टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। और जैसे अगर सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं तो उसके बारे में एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी टेस्टिंग होती क्या है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, ये आपकी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एंड टेक्निक्स आ गई। थर्ड पार्ट इज दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट यू ऑन द बेसिस ऑफ अ सिनेरियो। सपोज अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे कोई रिसोर्सेज आते हैं, हो सकता है वो लॉगिन पेज दे दें, सपोज फेसबुक का लॉगिन पेज दे दें, एंड दे आस्क यू, बिकॉज एवरीबडी हैज़ यूज्ड इट, कि आप इसके टेस्ट केसेस लिखें। इफ़ यू हैव टू डू इट्स टेस्टिंग, तो आप उसका टेस्ट प्लान कैसे बनाएंगे। आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे, आपके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं तो आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे आजकल के दिनों में, कोविड के टाइम पीरियड में, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू शॉपिंग अ लॉट, तो उसमें मैं देख रही थी कि बहुत सारी जगहों पे दे आर आस्किंग फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, और उसमें आपके पेमेंट गेटवेज जो हैं उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी जाती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी जाती है, थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज़ हो रहे हैं, और इसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग बहुत इन्वॉल्व हो जाती है। तो सपोज एक ऐसी आपको दे देते हैं जनरल सी सिचुएशन जिसमें आपने, यू हैव टू कम अप विद एग्जाम्पशंस, यू हैव टू डिस्कस विद देम, and you have to come up with the documents, test cases. Generally they give you a generic solution, but हो सकता है वो अपनी product से related भी कोई एक area आपको दे दें, और you have to ask questions and then you have to come up with the test cases या documents what they are asking for. So this is going to be a scenario based testing, वो जो आपसे पूछेंगे।
फोर्थ पार्ट इज कि बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं. सो दे ट्राई टू आस्क यू कि आपको उनके बारे में फ़र्क भी पता है या नहीं पता है. सपोज जो पहली टेस्टिंग करनी होती है दैट इज स्मोक टेस्टिंग, बट बहुत सी जगहों पे इसको सैनिटरी टेस्टिंग भी बोला जाता है. तो इसके कोई माइनर डिफरेंसेस होंगे, बट यू नीड टू नो ओके इनका डिफरेंस क्या है. बहुत एक आम क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है इन डिफरेंसेस में वो है लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग. अब वो देखने में एक से लगते हैं बट इट हैज़ लाइक माइल्ड डिफरेंसेस, तो वो आपको पढ़ के जाने, देख के जाने, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी. लाइक इफ़ यू गो थ्रू सम टेक्निकल क्वेश्चंस ऑनलाइन, तो उसके अंदर ये सब डिफरेंसेस आपको इजीली मिल जाते हैं. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देम. हो सकता है आपको बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ये चीज़ें पता हों, बट यू कैन नॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट देम. सपोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिवियरिटी एंड अ प्रायोरिटी. अब वो देखने में एक जैसे लगते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस. And then the most important part is the tools that you have mentioned in the resume, or if you're some experienced resource, तो वो कौन से tools आपने use किए. सपोज इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेड, आप नए हैं, आप कहेंगे मैं किस तरह टूल्स के बारे में मेंशन करूं. सो देयर आर मेनी ऑनलाइन टूल्स जो अवेलेबल हैं, राइट. सपोज कोई ऑटोमेटिक टेस्टिंग के टूल्स हैं, कोई बग ट्रैकिंग के टूल्स हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टूल्स हैं. ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए जैसे सेलेनियम का टूल है, जीरा इज फॉर बग ट्रैकिंग. सो लुक फॉर दोज टूल्स जो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस देम एंड मेंशन देम rather than going for the tools जो के licensed tools हैं जो companies में use होते हैं. So you always have the option of going for the tools which are freely available. So these are like the basic areas. आपको processes के बारे में पता होना चाहिए, testing types, techniques के बारे में पता होना चाहिए, scenarios के बारे में पता होना चाहिए. Scenario based में असल में वो आपकी personality को भी judge करते हैं कि कोई चीज़ें भी आती हैं, आप उसको किस तरह लेकर plan करते हैं और execute करते हैं. And then there are the difference in terminologies, and last but not the least are the tools that you are going to use. इसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा सबके लिए. बहुत सारे डेवलपर्स ये मिस्टेक करते हैं. वो ये समझते हैं कि जो क्यूए की चीज़ें हैं ये हमें क्यों बताई जा रही हैं, हम तो डेवलपर हैं. आजकल कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो जो क्यूए को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देती. इफ़ यू आर ए डेवलपर यू शुड नो हाउ टू राइट यूनिट टेस्ट. आपको टूल्स का पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी आजकल क्या सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल पास करती हैं. एंड इफ़ यू आर ए डेवलपर देन यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू राइट यूनिट टेस्ट. क्योंकि सिंपल टेस्ट या दूसरे जिस तरह टेस्ट फरहाना ने बात की, क्योंकि इससे एक चीज और पता चलती है कि ये जो डेवलपर है इसको पता है कि मैंने कोड किस तरह करना है. अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि मैंने टेस्ट केसेस किस तरह लिखने हैं, देन इट मींस दैट यू डोंट नो व्हाट इज द आइडियल वे टू राइट गुड कोड. So it's absolutely necessary that you see at least the basics, even if you are not in the QA, because QA is so important. And the second important चीज जो फरहाना ने मेंशन की कि आपने कोई ना कोई ऐसे टूल देखने हैं जो एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को पूरा गो थ्रू करते हैं. जैसे बग ट्रैकिंग है, किस तरह होती है. फॉर एग्जांपल आप कंपनी में और आपके कोड में बग आना शुरू हो गए, तो क्या आप उसी टाइम बैठ के चेंज करना शुरू करें. गिट के क्या प्रोसेसेस हैं, स्क्रम क्या होता है, एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है. सो जस्ट हैव अ लुक and do you should know and you should be able to tell the interviewer कि हाँ जी मुझे इन चीज़ों का पता है. Cool. So we discussed this. I completely agree. Testing is obviously an important part of our dev's job as well. So we should all know the basics. So we cannot go into the details of what are the expectations for each role, front end, back end, or different companies. So in general, whatever role you're interviewing for, whatever company you're interviewing for, definitely research beforehand and know what they're expecting. And even when you read the job description और वहाँ पे आपसे requirements जहाँ पे detailed mention होती हैं, do read them carefully because that says a lot about what this role is expecting and what kind of questions you should be prepared for. So on a high level, yes, do your research. Don't rely on any guidelines anybody is giving because you would need to go beyond those guidelines. So moving on to the technical interviews, this is now my favorite part. Basically, we're going to, on your screen right now, you see some sample problems. These are the very, very classic questions. You'd be able to find them on HackerRank, LeetCode, or generally if you Google them, you'd find a lot of solutions. But I would highly encourage you all to try to solve them by yourself. अभी हम एक problem से walk through करेंगे just to show you how you should approach a problem and how you should solve it. But for your actual interviews, do at least practice all of these and do go through a lot of other problems as well. But okay, moving on to the first problem, which is search in a rotated. Sorry, Umar.
सो अब हम लाइक एक प्रॉब्लम को हम वॉक थ्रू करेंगे, जस्ट कि आप लोगों को पता चले कि इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है एंड किस तरह होगा। एंड जो पिछले जो क्वेश्चन जितने भी हैं, जस्ट प्रैक्टिस देम इन दिस वे, ये जो भी हम अभी वॉक थ्रू करेंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो आपके अंदर कि यार मैं इस चीज़ें सॉल्व कर सकता हूँ। सो I am going to be the interviewer and Zobia will try to walk through you guys. So for example, she's here and she's here for the interview and ये वाला एक session चल रहा है, and then I ask her, okay, please tell me how are you going to search in a rotated sorted array? Okay, so if I'm asked this question, the my first thought would be like, I do not understand the problem at all. It's not clear. So what I usually do is I ask a lot of clarifying questions that would basically help me understand the problem. So in this case, like search in a rotated sorted array doesn't tell me anything. So the first thing that I would be thinking is what kind of array is it? What data does it contain? So that would be my question to the interviewer. Okay, so this will give me an idea that okay, Zobia is thinking or the candidate is thinking about it. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसको हो सकता है आंसर ना आता हो, लेकिन she's just trying to figure it out. So I'll answer that question. Okay, it contains integer. Great. Then I would be asking, is there any maximum size of array, or can it fit into memory? So why does it concern you? Obviously, it matters because if it's very big and it doesn't fit into memory, then I need to consider those things as well. Like, do I need to break it down into chunks and solve the problem in chunks? Because that becomes a whole different problem in itself. So I need to know if it can fit into memory or not. Exactly. So this is exactly what we are looking for. कि जो भी कैंडिडेट है, is it thinking? क्या वो कॉर्नर केसेस देख रहा है, क्या वो एज केसेस देख रहा है, क्या वो प्रॉब्लम की समझ भी आ रही है कि नहीं, कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन, नो मैटर यू नो द सॉल्यूशन, डू आस्क दिस क्वेश्चंस. Cool. Then I'd be asking a few more questions, like, does it contain negative numbers? And let's say I get the answer like you do, because obviously these are integers. And then, are there any duplicates in this array? Because that changes the problem completely again. If the numbers are unique versus the number are there are duplicates, you're going to have to handle extra cases. So let's say I get the answer that no, you do not have duplicates, all the numbers are unique. Then you have a few more questions like what is the maximum range of numbers. So again, it matters to understand, like, let's say somebody tells me your integers are from -100 to 100 and my array is very big. Then I could approach the problem in a very different way compared to when somebody tells me your range of numbers is basically the range of integers, let's say 10 raised to power -6 or 4 or whatever. And then you have more, I could ask more questions like, what will be the output, like if I find a number versus I don't find a number. So there could be multiple ways to respond. Like, I could be returning a boolean that I have found the numbers, I have found the target number, or I haven't found a number, I would just return false. Or I could be returning the actual index where I found the number. So it's very important to ask your interviewer, like, what is the output the interviewer is expecting. So let's say I have the answer that you need to return the index if you found it, and if you didn't find it, you return -1. So now I sort of understand the problem, and I would move to the next stage, which is trying to think of a solution. But wait, before that, it's very important that you write at least a couple of test cases. Like, you write sample input and output and discuss with your interviewer, is that what your interviewer is expecting? So in this case, let's say I write one test case as, so I write these two test cases and I verify with my interviewer, is this what you're expecting? And Yep. great. So interviewer So confirms. basically, you are going to cover the negative and positive side of it. If you get the answer, how are you supposed to, go about it? And if it's a negative answer, how are you going to Exactly. So for when you didn't find the target number, then you just return -1, and when you find it, you return the index, which in this case is third, or -1 if you didn't find. Now is the time to think about solutions. The first solution that usually comes to my mind, I start discussing it with the interviewer. So in this case, for example, I can think of a very, very simple solution, which is going to be like iterating over the entire array. And it could just be a simple loop. I start from the first index till the last index. If I find the target number, I return that index. If I reach the end of the array and I didn't find the index, I would just return -1.
So that's the simplest solution. And I would also discuss with my interviewer that, it would definitely work, but the problem is that it's the simplest and it takes order n of time, but no space complexity. And it's also important to ask your interviewer, should I code this or should I move forward to thinking of a better approach? So let's say I ask Umar, should I code this solution? And I'm assuming you say you don't code the brute force. तो And then- इस पे मैं ब्रूट फोर्स पे जस्ट एक चीज बात करना चाहूंगा कि अक्सर कैंडिडेट्स आते हैं और वो एक बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, दे नेवर कम अप विद अ सोल्यूशन. सो फर्स्ट फर्स्ट जो भी आपके जहन में आता है, ब्रूट फोर्स आ रहा है, जस्ट गो विद इट. आप उसको एटलीस्ट लिखना शुरू करें ताकि जो आपका इंटरव्यू है वो आपके साथ बातचीत करना शुरू करे, वो आपके थॉट प्रोसेस को देखे, वो देखे कि यार इस बंदे ने किस तरह चीज को सॉल्व किया. अगर आप एक बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाते रहेंगे तो आप बस सर ही अपना हिलाते रहेंगे और यू विल नेवर कम अप विद अ सोल्यूशन. सो लेट्स स्किप इट फॉर नाउ. हम इसका कोड स्किप करते हैं. Cool. So now that I have a go ahead, I would start thinking about a better approach. So let's just think about the problem. You have a rotated sorted array. I know that my array was initially sorted and then it got rotated at a particular point. So I know that if I break the array down into two halves, either of the halves is going to be sorted and the other one will not be sorted. Why? Because it got rotated after sorting. So if I just, I'm iterating through the entire array, I'm just not using the sorting part of it for optimizing my solution. So it's very important that you use all of the benefits you have in your problem. So right now I have the sorting part. So I'll use that to break my problem down or my array down into two halves at each step. And while doing that, I reduce the complexity by half at each step. So what happens is there are two ways. Like I could think of a recursive solution where I'm basically checking at each step, like I'm dividing the array into two halves and I'm checking which one is sorted and which one is not. If let's say this right half is sorted and the number that I'm looking for falls between this range, let's say it's 1 to 5 and the number I'm looking for is 3, I need to go into this. I know that I can find my number in this half. If my array is sorted but my number is not in this half, then I need to go in and check in the other half. And so on. So basically you go into, like, just imagine it as a binary tree. You keep splitting into two halves and you keep going into the half where you're expecting to find the number. So that's one way. But I could also at this point discuss that because recursive solution comes with its space complexity as well, because at each stage you're stacking the recursive calls. So I might want to go for an iterative approach. And after discussing my problem thoroughly with my interviewer, I would sort of asked, like, can I write code at this point? And I hope I have a go ahead, Umar. Sure, let's write the code. Cool. So I've discussed two solutions and approaches, and now I start writing the code. So let's say this is my first draft of the code. And I know, like, I can walk through this code later on, but first I would just let Umar give feedback on this code. How does it look? Yeah, sure. So जो इंटरव्यूअर होगा वो जरूरी नहीं है कि जब आप लिख रहे हैं तो ही ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू राइटिंग. वो शायद सिर्फ ये देख रहा होगा कि आप किस तरह कोड करते हो, व्हाट इज द वे ऑफ व्हाट इज योर कोडिंग स्टाइल, राइट. सो इफ आई सी दिस, अगर आप इसमें देखें तो दिस इज अ फंक्शन एंड इट इज कॉल्ड सर्च एलिमेंट. एंड सर्च एलिमेंट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज हम लोगों ने जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था तो वी वर सर्चिंग इन ए सॉर्टेड अरे. सो सर्च एलिमेंट इन ए नॉन सॉर्टेड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए सॉर्टेड अरे. सो फंक्शन का नाम यहाँ पे ठीक नहीं है. फिर जो आप वेरिएबल्स के हम लोग नाम इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया, मुझे ये पता चल रहा है कि अच्छा यार ये बंदा जो है ये जब कोडिंग करेगा मेरी कंपनी में आके तो एक हफ्ते के बाद एक तो खुद भूल जाएगा और जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनको भी कोड की समझ नहीं आएगी. तो दिस इज अ बिग नो, राइट. सो ये वाली जो आदतें आपकी यूनिवर्सिटी में थी, यू नीड टू लीव देम, यू नीड टू राइट बेटर कोड, यू नीड टू गिव वेरी इंपॉर्टेंस टू द वेरिएबल नेम. सो don't do that. So I will ask you, maybe can you modify this into a better code? Cool. I would just like to add here, like, as Umar mentioned, even if I try to explain this code, I would keep forgetting in the middle ke I kya tha, j kya tha, mid kya hai, num kya hai. So again, if you write this kind of code, even you will not be able to explain it to your interviewer during your interview. So definitely let's not make this mistake and write a relatively better code, I hope. And yeah, so I would quickly walk my interviewer through it, like, this is my input array, this is the target number I'm searching for. So I start with this. So start is my start index and is the end one.
and I get the length as in the end, because I know that's where I need to stop. So at each point, I keep calculating mid and check the conditions and so on. I will not discuss this just for the sake of time, but in detail, you walk your interviewer through your code. And while doing it, if you see any mistakes or errors in your code, don't try to hide it. Just quickly fix it, because your interviewer is most likely going to see it anyway. So hiding is not going to help. Just fix it yourself. That's way better and positive flag. And then moving on to, yeah, so after walking them through it, it's better that you just, remember we wrote these two test cases. It's very important that you walk through the one of these test cases or two of them, and like, dry run your problem on it and see if you're getting the actual result. If you're not, highlight it. If there's any issue, you could say, I have a problem with this test case maybe, so I need to go through my solution again and see if I need to fix. अगेन डू नॉट ट्राई टू लाई एंड लाइक, अब कभी कभार लोग इधर उधर चीजें करके उसको करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, सी द रिजल्ट इज करेक्ट. डू नॉट डू दैट. योर इंटरव्यूअर कैन क्लियरली सी दैट. So yeah, definitely mention the edge cases. Let's say in this case we mentioned one of them in before even starting the solution. Other could be like, what happens if the array is empty or null? What do you return? And discuss the space and time complexities. So for instance, my optimized solution doesn't use any extra space, and time complexity has reduced to log of n, because you keep reducing it at every stage. So definitely also go through the time complexities and big O notations, all of those concepts, because they are going to help you quickly determine and discuss the time space complexity for your solution. Again, dry run your code on the test cases you wrote in the beginning. And with that, you're done with the problem. We'll just share a few tips on the whole entire interview process. And I'll let Umer start with these tips. Yep. So, सबसे पहले जो most important tip है, that is you need to be really honest with yourself as well as the interviewer. अगर आप उसके साथ झूठ बोलने की कोशिश करें, जिस तरह जोबिया ने बताया कि अगर आपके solutions ठीक नहीं आ रहे, आपने dry run किया और चीज़ नहीं आ रही, just highlight them. इससे ये नहीं पता चल रहा होगा कि यार इस बंदे को आता है नहीं, इससे ये चीज़ हाईलाइट होगी कि ही इज थिंकिंग. मैं अगेन इस बात पे बार बार फोकस करूं दैट यू नीड to show your thought process. It's not important that you write correct code, but it's important that you are going through the proper thought process. Point number 2 is practice writing code on a paper or whiteboard. इस पे मैं जितना ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ मैंने किया. I told you guys that I bought the whiteboard in my 5th grade and ये मेरे पास अभी भी पड़ा है. मैं उसको हर जगह यूज़ करता हूँ. मेरी कंपनी में हर जगह whiteboards हैं. We used to practice a lot of things. कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो you should buy one and you should start practicing these questions on the whiteboard. Make sure you understand the problem. जैसे जोबिया ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. You need to ask clarifying question. कभी कभी ये होता है आपको solution नहीं पता होता, लेकिन by just asking clarification question you are able to convey your thought process to the interviewer. Communicate any assumptions you are making. अगर ये कम्युनिकेशन स्किल होता है इंसान का. हम लोग बहुत सारी चीजें एजम्पशन के ऊपर एक दूसरे से कर जाते हैं. हम लोग ये सोचते हैं यार अच्छा अगला तो ये सोच रहा होगा, लेकिन वो ऐसा सोच नहीं रहा होता. सो इफ यू हैव समथिंग जस्ट से इट आउट. टेल द इंटरव्यूअर के जी क्या आप इस तरह ही कह रहे हैं. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट मोर एम्फसाइज ऑन दिस, बट दीज आर द पार्ट. सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होता, आपकी और भी बहुत सारी चीजें जज होती हैं. सो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट आई विल आस्क फरहाना टू कंटिन्यू. सो एक्चुअली तो हमने पूरे सेशन में इसको कहीं ना कहीं कवर कर लिया है, बट मेन थिंग इज़ कि जब भी आप किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट. इंटरव्यूअर को आप उसके अंदर इन्वॉल्व रखें, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उस डिस्कशन के अंदर ही यू कम अप विद अ सोल्यूशन, क्योंकि यू आर ब्लैंक बट इन अ डिस्कशन यू कम अप विद अ सोल्यूशन. सो वो जो एक थॉट प्रोसेस आप इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हो सकता है इफ़ यू आर स्टक एट सम पॉइंट, सो दे आर गोइंग टू गिव some hints or helps. So उनको आपने छोड़ना नहीं, and you have to honor the hints they are giving you. क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प यू. तो उन छोटी छोटी चीज़ों को आपने बहुत ध्यान देना है कि इफ़ दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू, उसको आप अंडरस्टैंड करें, और दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू एवेल्यूएट यू एज अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी फिट फॉर द टीम और नॉट. तो वो पूरा एक पर्सनैलिटी जजमेंट है, थॉट प्रोसेस है, जिसको देखने की कोशिश करें. इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ कोड दैट यू राइट. तो उन सब चीज़ों को आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है.
That's very true. And for even like in my interviews, a lot of time the candidates they're not like listening to me. मैं उनको कुछ बता रही होती हूँ और वो अपना सोच रहे होते हैं. They don't like give it a thought or like वो आपकी बात को consideration नहीं देते. हालांकि you're trying to help them out because in mostly like I want my candidates to ace the interview. Like I don't want to fail them, but you know they just don't take the hint. So it's a very valid point. And Um, never say a no. Like I don't know anything, just try doing it. कोई बुकिश नॉलेज है उसमें भी कोई कॉन्सेप्ट आपको आता है आप बताएं, बट नेवर से नो, क्योंकि उसमें यही लगता है कि दैट यू आर नॉट रेडी टू हैव दैट चैलेंज एंड लर्न, सो डोंट से नो. Absolutely. So yeah, keep trying. And we discussed this already, but yes, write some test cases in the beginning. I would highly recommend doing this because you know, इससे ना आपकी problem. Sorry. So इससे आपकी problem बहुत crystal clear हो जाती है, and you know that you and your interviewer are on the same page for sure. So definitely do this and write the output input. Um, and do not forget to discuss the edge cases and error cases. Like take a moment to think about it. वो naturally आपको शायद नहीं आएंगे, लेकिन आपको सोचना पड़ता है कि what could go wrong with this solution? Is there anything that I need to think beyond the solution or beyond the happy cases? So definitely think about those. And also make sure that you mention your space and time complexities and trade-offs. Like I did, I said I could go with the recursive approach, but there, you know, I have an additional cost of space. I know a lot of people would say कि आपकी array तो 4 elements वाली थी, why does it matter? But in real life you're solving data with like millions or billions of records or whatever, so it matters a lot. You need to see कि आप कहाँ से छोटी छोटी time complexity, space complexity reduce कर सकते हैं. And that's what all the problems right now are about. Like ये basic algos coding सबको आती है, but the optimization and being able to work on the real life problems is something that industries are struggling with. So that's what you want to offer them even in a simple problem. And lastly, try to write a good, correct code. That would only happen if you're comfortable and familiar with one language, at least one programming language. So definitely do this and try to write code as good as possible, as readable as possible, because that's going to give a very positive vibe about you to the interviewer, and they know that अगर आपने कोड लिखा है उनको बार बार जाके वो रीफैक्टर नहीं करना पड़ा, क्लीन नहीं करना पड़ा, so it's a positive sign. So those were the tips for interviews. And with that, we have this slide for useful resources. If you want to, you know, take a screenshot, go ahead. But generally, you could go through. There's this book, "Cracking the Coding Interviews" by Gail Lachman. It's a very good book. It's my favorite, and I always read this before my interviews and practice it. So definitely do this. And then we have Career Cup, Lead Code, Educative, and other some other resources. HackerRank. I'm sure you'd be familiar with some of them, but you could, you know, go through others as well. We also will be sharing these resources and guidelines on our website or in some blogs, so check out for that as well. Also, we had a very good session with Farah yesterday on interview guidelines. I think I'll try to leave a link in this comment section below. So go check that out as well and watch that video if you need more details into how to conduct your interviews. And we had a lot of other sessions yesterday. You can watch all of them. So with that, I think we're ending the session. If you have any questions, please post. And Farhana and Umer, do you want to add something? So Farhana, go first. I think हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है. So basic things are covered technically, personality wise. So it was a good session and it was good knowing you all. Absolutely. और दूसरा ये कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रिपरेशन आप कर सकते हैं आप करें. वॉच मॉक इंटरव्यूज़ ऑन यूट्यूब. आप ये देखें गूगल किस तरह इंटरव्यूज़ लेता है, फेसबुक किस तरह लेता है, हर चीज़ पड़ी हुई है. एंड शुरू में आपको वो चीज़ें बहुत मुश्किल लगेंगी कि यार ये मेरे ऊपर क्या चीज़ आने लगी है, लेकिन द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कंफर्टेबल यू विल बिकम. सो दैट्स माई ओनली एडवाइस. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिजेक्शन से डरना नहीं है. फेलियर्स से हमेशा आप सीखते हो. और आपको ये लगेगा कि जितने भी इंटरव्यूज के आप चीजें वीडियोस वगैरह देख रहे हैं ना, मोस्टली उसी में से चीजें वो पूछते भी हैं, बिकॉज उनके लिए भी बहुत सारी सोर्सेज वहीं से आती हैं. सो दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. Yeah, and I think people assume that you're lucky enough to be somewhere. I think nobody's lucky enough. Everyone has to make that effort. And as Umar also mentioned, mock interviews are very important.
do it with your friends, anybody around you. क्योंकि उससे you go through the entire process, and if you keep making the mistake, you get to fix it in your next mock interview. And also the real interviews, sometimes I think a lot of people interview for the companies जो उन्होंने actually join नहीं भी करनी होती, just for practice and stuff. So I think that's also a good idea to go into the real interviews, even if you're not maybe interested in switching at that point. um, but I mean, people would have different opinions on that, so I'll just leave it to that. But yes, definitely practice with mock interviews or whatever, but practice, practice, practice. और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो उनके लिए एडवाइस ये है कि आप व्हाइट बोर्ड लें, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें एंड जस्ट रिकॉर्ड इट, कैमरा रखें, जस्ट रिकॉर्ड इट एंड सी द मिस्टेक्स यू आर डूइंग, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. That's true. That's very true. Farhana, we have a comment on one of things you mentioned, so if you could comment on it. So I would read it loud. Unlike Farhana mentioned, one should ask a couple of days to prepare. Local market HR never allows this long time. Instead, it's taken as you are prepared. Have experienced this. Is there any effective way of doing this? So I think she's trying to ask that cases, people do not allow you enough time and they're expecting that you're already prepared for everything. so if you have applied to any organization, तो आपको उसी दिन से एक तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. ठीक है, मतलब उसी टाइम से आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बिकॉज यू नेवर नो कि वो आपको कॉल कब आ जाएगी. So first step is, as soon as you apply, you just start preparing for it. और generally what happens is कि वो आपसे कम से कम आपको 1-2 दिन का टाइम देते हैं. जो ओवरऑल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, बहुत कम ऐसा होता है कि दे डोंट लिसन टू यू, बट डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने तैयारी तो उसके साथ साथ शुरू कर दी है. सो नेवर से नो एंड जस्ट अटेम्प्ट इट. और हो सकता है दैट्स लाइक योर फर्स्ट इंटरव्यू, आप उसके बारे में थोड़ी बेसिक तैयारी करके जाएं, एंड देन यू विल गेट सम डेज फॉर द टेस्ट एंड अदर फेजेस जो भी आपके इंटरव्यू के होंगे, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी. Yeah, I would add one more thing here. Like, usually you try to negotiate, you try to ask for time, but I think if some HR is very rigid, sometimes you have a genuine problem. You might be sick, you might have something going on in your life, and you try to negotiate कि मुझे एक हफ्ता दे दें or something, and they're like, no, no, you have to do it right now. I think then that company is not even worth joining, in my opinion, because nobody should be that rigid or flexible. You have a genuine reason, you're asking for time, and they're not at all negotiating on it, then just let it go. It's not worth wasting your time. असल में समटाइम्स इट हैपेंस कि देयर इज अ पोस्ट जिसको उन्होंने फिल ही विद इन अ वीक करना है. तो मतलब अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि वो भी एक ऐसी पोजीशन में हो वेयर दे हैव टू कंप्लीट इट इन अ वीक और टू, अदरवाइज वो पोस्ट आपकी निकल जाएगी. If But you're even in working that case, then it's not fit for you. You just let it go, right? Like, in such cases, you just let it go. yes. Cool. So I don't think we have any other questions. Yeah, so there are some comments on the session, but yeah, no questions. If there are, we can get back to them later on in the chat. But thank you so much, Farhana. It was really, really great, and you had some very good insights. And same goes for you, Umer. Thank you for Thank joining you. us today. Yeah, I hope it will be helpful to all the candidates. And then now we have one question. Let's just answer this, and then we can take a leave. I think we should always remain prepared for the interviews. What are your thoughts? सो एग्जैक्टली जिस तरह अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको किसी टाइम भी कॉल आ सकती है, हो सकता है कि आपको सुबह कॉल है जैसे जस्ट आज आ जाए या कल आ जाए, तो आपने जैसे ही अप्लाई किया, इनफैक्ट आपको अप्लाई करने से पहले ही तैयारी करना शुरू कर देनी, बिकॉज यू नो कि आपने जैसे ग्रेजुएट है ना, उसके बाद आपका यही फेज शुरू हो जाता है. तो येस, इट्स जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप तैयारी करेंगे, नॉट जस्ट टेक्निकल, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द नॉन टेक्निकल पार्ट. तो इट्स अ ह्यूज थिंग. मतलब ऐसे नहीं कि आप एक ओवरनाइट यू विल जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप हो सकता है पहले जॉब में आपको ऑफर ना मिले, दूसरी में ना ऑफर मिले, तीसरी में ना ऑफर मिले, बट इवेंचुअली आपको मिल जाएगी, बिकॉज आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं. कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आप उसको इस प्रोसेस से गुजरते हैं. तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Yeah, as prepared as you can stay, do that always. But still, like, if you're actively looking for a job and you're in that phase जहाँ पे आप बहुत सारी companies को interview देना चाहते हैं and all, then obviously take some extra time to prepare, sit down and start studying the basics and everything. Cool. So I think with that, let's just end it. Thank you again and bye. Allah Hafiz. Best of luck. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.